India announced that it will start manufacturing the antibiotic Penicillin G. This comes after 3 decades after the country's last plant was shut down. Penicillin G एक active pharmaceutical ingredient है found in most common antibiotics. API drugs के main ingredient होते हैं, which is responsible for bringing its desired effects. Penicillin G treats serious bacterial infections such as pneumonia, meningitis, gonorrhea, syphilis, etc. इसके poor oral absorption के कारण इसे जनरली एडमिनिस्टर किया जाता है इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलरली. पेनिसिलिन जी का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद हो गया था ड्यू टू द सब्सिडी ड्रिवन चीपर चाइनीज प्रोडक्ट्स दैट फ्लडेड इंडियन मार्केट्स. लेकिन थैंक्स टू द गवर्नमेंट्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम एंड अदर रीजंस, इंडिया वांट्स टू स्टार्ट प्रोडक्शन अगेन. Why is India restarting the production of penicillin G after such a long time? First, the supply chain disruption during COVID-19 made India realize the need for self-reliance. Second, manufacture करने के लिए बहुत सारे huge initial cost incur करना पड़ता है as it's a cost incentive production. Third, क्योंकि चाइना एक already well established supplier था और बहुत ही सस्ते में API supply कर रहा था, Indian companies will need bigger and better facilities to compete with the prices. For more informative videos like this, follow Exact IAS.